So to go from XC, YC, ZC to these image coordinates, if you use homogeneous representation, then this conversion is simply a matrix multiplication, or technically this conversion becomes linear. Okay? When you achieve conversions using matrix multiplications, those conversions or transforms are called linear. Okay, so this is the camera matrix that does this. If we further allow to choose a different point as the origin, then at the end of the day, these image coordinates can again be found using these homogeneous representations using a matrix. So the matrix has now further two parameters called principal point offset. If per unit length in x direction there are different number of sensors or pixels, and in y direction there are different number of sensors and pixels, we can incorporate that thing into the camera matrix using this mx and my, where mx is the number of pixels in x direction, my is the number of pixels in y direction per unit length. Now these coordinates are in number of pixels form rather than in millimeters or centimeters form. Okay? And this conversion is again achievable through a camera matrix, and this matrix makes it all this conversion linear again using the homogeneous coordinates. And specifying this particular number, which is the product of f and mx, specifying this number as ax, calling this symbol as ay, calling this thing as x0 and y0. So far, the camera has 4 internal parameters. You can change these 4 numbers and you have different settings. And then, last thing, to achieve certain effects, might be distortion effects, might be kind of special effects. If you allow the model, if you allow your model to have this value non-zero, then one effect that it achieves is that the image is perceived as, so that the image plane axes were not orthogonal, or the image plane itself was not orthogonal to the optical axis. These kind of cameras are not manufactured physically, but these are particular kind of effects that you know that if camera matrix has freedom to choose this parameter non-zero, then you can have certain effects that that physical cameras do not exist for. So again, today. Okay. So far, we said, so there are 5 parameters of the camera, this, that, and the matrix is of size 3 by 4. अब तक हम camera matrix को C कहते हैं. From now onwards, we will call camera matrix as P, and the symbol C will be reserved for the camera center. अभी हम देखेंगे camera center will be different. तो अब तक की slides में जो terminology use हुई है, जो symbols use हुए हैं, the slides from now on they will be having different symbols, and the reason is मैंने कुछ slides पिछली और कुछ दूसरी और कुछ नई बना के mix की हैं, तो symbols was different. I just let it go that way. Clear? Just remember this 3 by 3 block. This 3 by 3 block is referred to as matrix K, and this is technically called camera calibration matrix. Clear? If you delete the last column from the camera matrix so far, the 3 by 3, the left 3 by 3 block is denoted by K, and this is somewhat standard. It's denoted by K, and this matrix is called camera calibration matrix, and it has all intrinsic parameters of the camera, internal parameters of the camera. सही है जी? From now on, symbol C will denote the center of the camera, and that's a point. From now on, P will denote the camera matrix rather than a point in 3D. Clear? Okay, अब तक क्या था और अब इस स्लाइड में चेंज क्या है वो हम जरा से देखिए. एक तो ये ध्यान में रखिए कि जो हमारी अब तक में की मशीनरी है वो क्या चीज़ है, हमें गिवन क्या क्या होता है और हम फिर फॉर्म क्या करते हैं. Let me write those things in steps. जो अब तक की मशीनरी है इस स्लाइड से पहले वाली,
we are given with 3D point in camera coordinate system. So this is camera coordinate system. So the location of 3D point is available in camera coordinate system. That is available, that is given to us. Number 2, we are given K. The camera calibration matrix is given, which means focal length is supplied, and X and Y is supplied, PX, PY is supplied, and all those things are given. Clear? So camera calibration matrix, which means all the internal parameters are given. The 3D point in camera coordinate system is given, and then given these two things, so this is the input, so the output is the 2D points, that we denote those 2D points as X, Y, and Y. The image coordinates of this one. Given 3D point in camera coordinate system, given all the settings of the camera, I can tell you that this 3D point will be where in the image. These are the image coordinates. Sahih? Those. Okay. Okay, I repeat. If a point in 3D is measured with respect to the camera coordinate system, there is a camera center which is 0, 0, 0. It is assumed as a region. The camera axis के लिहाज से a 3D point is measured, and all the internal settings of the camera, intrinsic parameters of the camera, which is the focal length, mx, my, px, py, skew parameter, whether the skew is 0, non-zero, and what value of skew. All these things are specified, which means this matrix K is specified. If these two things are given, I can tell you this point will map to which location of the image. And here xi means the x coordinate in the image and y coordinate in the image. Clear? लेकिन ये जो सारा मैंने आपको बताया है, this is somewhat practically impossible or very difficult, and the reason is the following. आमतौर पे जब आप तस्वीर लेते हैं या कुछ बनाते हैं, तो you fix a world coordinate system which is fixed, और सारी measurements उसके लिहाज से या आप पहले से कर लेते हैं या आपको supply की जाती है, whatever. For example, इस कमरे में मैं किसी एक पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस विल बी वेरी फिजिबल कि मैं ये इस कॉर्नर को, ये जो कॉर्नर है, इसको मैं ओरिजिन ले लूँ और एंड आई अज्यूम दिस एज 0, 0, 0 एंड then this is, let's say, x-axis, this is, let's say, y-axis, and this is, let's say, z-axis, and I can measure now each and every point by physically, by taking an inches tape or something. I can physically measure mark each and every point के coordinates with respect to this world. So I will call this as world coordinate system rather than camera coordinate system. होता नॉर्मली ये है, और by the way इस coordinate system में आप पूरी दुनिया का हर पॉइंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जहाँ पे आप इमेजरी ले रहे होते हैं वहाँ पे आप फिक्स करते हैं कोई वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं which are interesting उनको आप मार्क कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल if you just synthetically, if you think if you have a wooden skeleton of a human being, let's say you have a wooden skeleton of a human being, and उसके कुछ पॉइंट्स आप मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक रेड डॉट लगा देते हैं कोई एक हाईलाइटर किस्म से, या कोई फिजिकल यहाँ पे ग्रीन या ब्लू, सम पॉइंट्स लेट्स से 20 or 30 पॉइंट्स, और देन उनको आप फिजिकली मेजर करते हैं यूजिंग अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक, और अब आप एक और इस तरह के और स्ट्रक्चर्स भी हैं आपके पास में, कोई टेबल है वगैरह वगैरह. अब आप कैमरा लेके आते हैं, ठीक है, और हो सकता है आप एक या एक से ज़्यादा कैमरास लेके आए, लेकिन वो जो प्रोसेस एक कैमरे की मल्टीपल कैमरास के लिए हुई. अब एक कैमरा लेके आते हैं. नंबर 1, कैमरा से उसको मेजर करना और उसके हर पॉइंट को मेजर करना, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. कैमरा एक्सिस इस वक्त क्या है, कैमरा सेंटर इस वक्त क्या है, कैमरा सेंटर अगर इस वक्त 0, 0 है, हाउ टू मेजर दोस पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कैमरा. फर्दर द कैमरा विल मूव इन फोटोग्राफी, और देयर विल बी मल्टीपल कैमरास दैट यू हैव इंस्टॉल्ड. तो क्या आप उस एक पॉइंट को जो 3D में पॉइंट है, क्या हर कैमरे के लिहाज से मेजर करेंगे जब कैमरा मूव करेगा, या जब भी नया कैमरा लेके आएंगे जितने भी पॉइंट्स हैं. नॉर्मली होता ये है कि जो आपको पॉइंट्स दैट आर अवेलेबल, दे आर अवेलेबल इन अ फिक्स्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो आपका कैमरा है वो भी आप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में समहाउ मेजर करते हैं. कैमरा का सेंटर वर्ल्ड के लिहाज से कहाँ है, यू समहाउ गेट टू नो इट.
कैमरा के एक्सेस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से इसके एक्सेस किधर हैं, these are there, then you will be able to find out कि ये जो पॉइंट है जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड है उसमें भी मैंने मेजर कर रखा है और इस वक्त कैमरा का सेंटर जो है वो भी मैंने वर्ल्ड के लिहाज से मेजर कर रखा है। कैमरा सेंटर इज अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैमरा के जो तीन एक्सिस हैं these are vectors, these are directions with respect to the world coordinate system. If I know the 3D point in the world, which is the typical case, if I somehow measure the camera center with respect to world, if I measure the axis with respect to the world, then I can, that's a typical scenario in which the imagery is taken. So now, what will be the image coordinates of a point जिसके coordinates are not available in the camera coordinate system? And that's the typical scenario. The point के coordinates they are available in the world coordinate system, they are not available in the camera coordinate system right now. The machinery so far works only when the point is available in camera coordinate system. If you can see, I have used the term x, c, y, c, z. Yes, no. तो सवाल समझ में आ गया? So मैं दोबारा से प्रॉब्लम पोज करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये है 3D point in world coordinate system is available and the camera matrix is available. Now can you find out वो जो 3D का point है in this? The answer is not in a straightforward fashion. We need some more things. The other things are these. मेरी बात समझ में आ रही है? पहले यहाँ पे कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था and we are good to go. जस्ट वो मैट्रिक्स अप्लाई करें, सारी मैथमेटिक्स हमने डेवलप की हुई है जब वो कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। कैमरा के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर पॉइंट मेजर किया गया है तो दिस इज द प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई किया। नाउ वी आर अवेलेबल विद अ पॉइंट जिसके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है, कैमरा के सारे इंटरनल पैरामीटर्स हमें पता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि अब कैमरा का सेंटर वर्ल्ड ओरिजिन नहीं है। पहले कैमरा का सेंटर 0 0 0 पे था, अब कैमरा का सेंटर वर्ल्ड के लिहाज से किसी कोई एक पॉइंट है। पहले कैमरा का एक्स एक्सिस ही एक्स एक्सिस था, अब वर्ल्ड का कोई एक्स एक्सिस है, कैमरा का एक्स एक्सिस उसके लिहाज से फर्क है। बिल्कुल एक्सिस फर्क है। एक बार समझ नहीं आई कि आपने कहा कि कैमरे के लिहाज से मेजर किया है, लेकिन हम पिक्चर कैमरे के लिहाज से देख रहे हैं तो वर्ल्ड जो सेंटर है ओरिजिन है उसको हम फिक्स करेंगे तो वो भी किसी एक पॉइंट को फिक्स करेंगे ना। Yes, but that is fixed. That has to stay fixed throughout. इन कैमरे को कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिन है वर्ल्ड? क्या मैं बताता हूँ। Just hold on. सही है जी? Okay. Third thing that we require 3D center, मुझे 3D नहीं लिखना चाहिए, जस्ट सेंटर लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर 3D लिखा है, 3D center coordinates in world coordinate system. ये कैमरा का मुझे सेंटर पता होना चाहिए वर्ल्ड में कहाँ पे है, ठीक है? अब ये ऐसा नहीं होता कि आप लाएं और कैमरे का सेंटर कैमरे के ऊपर लिखा हुआ हो इस वक्त मैं वर्ल्ड के लिहाज से यहाँ पे ऐसा नहीं होता। There are ways to estimate that. Right now we are assuming कि कैमरा सेंटर अगर हमें पता है, later on we will see कि how we will estimate this, ठीक है? Then fourth, camera axis with respect to world coordinate system. अगर ये चार चीजें हमें पता हो, then we can find out कि ये जो point है, इसके image में coordinates क्या आएंगे, ये कैसे find out करते हैं? This is that slide, इसको मैं बड़ी तफसील से बड़ी डिटेल से बताता हूँ। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि हमारी इनपुट्स इस वक्त क्या हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट देन जो प्रीवियसली हमारे पास आती है। जो एक पॉइंट था वो कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, अब वो कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर नहीं है तो दीज आर द इनपुट्स दैट वी यस ना यस समझ आ गई? ओके ग्रेट। So let me take a diversion and I'm going to explain you certain things that are not in this slide, but those things are required to make this slide understandable.
चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, चेंज ऑफ फ्रेम इसको क्या देंगे, चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये लाइट ऑन हो सकती ऑन करना। हाँ ओह शिट और वो हाँ हो गया सही है, सही है। बैठे हैं